Assalamu alaikum. Good morning. आदाब अर्ज़ है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आप सबका खैर मकदम है। हमारे दरमियान ऑनरेबल फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। सर का दिल के गहराइयों से खैर मकदम है। ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, we do have Dr. Professor G. Aloysius as keynote speaker, and we also have Dr. Sunil George, who is Director of Symbiosis, Hyderabad Law School. Friends and dear esteemed guests, it is indeed a great pleasure that we have gathered today for a national seminar organized by our Department of Sociology, in collaboration with Department of Women Education of Maulana Azad National Urdu University, under the guidance and able support encouragement of Honorable Vice Chancellor Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab. This is indeed, and I assure that we welcome you to a very important discussion of the seminar, very relevant theme of the seminar, Sociology of Subaltern Communities, revisiting Dalits, Minorities and Tribal Studies in Southern India. This gathering is dedicated to an insightful discussions, shared learnings and professional growth. And in this, we have been honored by the presence of distinguished guests, participants and delegates, including the chief guest of the session, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab. The seminar is also an idea of exchange, exploring new possibilities, foster meaningful connections. We encourage you to actively be part of this seminar today morning. We had started today's seminar today early morning at 9 o'clock and seminar discussion began. Now, this is the session for inaugural ceremony of the one-day national conference organized by Department of Sociology and in collaboration with the Department of Women Education. I kindly request Professor G. Aloysius to please come on dais as keynote speaker. I invite you, sir. Please join us on the dais. One of the eminent social scientists of the country. I request now my colleague Dr. Vivekanand to help in facilitating the guest. I request Dr. Vivekanand for getting a memento, shawl and bouquet. I request the Honorable Vice Chancellor to please welcome the guest. First, the Director of Symbiosis, Sunil George Sahab. Okay. And first, I request you to, sir, honor the chief guest of the session, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab. With a shawl, a token of memento as memory from the university. Thank you so much, sir. I also request to honor the Director Symbiosis, Dr. Sunil George, Vice Chancellor Sahab. I request you to please, Dr. Sunil George will receive memento, shawl and a bouquet. सर, आपसे गुजारिश है प्रोफेसर जी एलोयसियस जो कीनोट स्पीकर है उनको भी बुके और शॉल से नवाजें. Thank you so much, sir. Yeah, can you bring a memento for the Honorable Vice Chancellor? Professor J. Aloysius is one of the eminent social scientists of the country who writes a lot on the relevant thesis. I request to bring and honor the Honorable Vice Chancellor. Please come. Yeah.
Quickly, can you honor to the Registrar of the University, please? Yeah. 1 minute. Thank you so much. As we are on time and it's a few minutes late, but I'm sure that the session will be on time and we'll be finishing on the inaugural session, which we have decided. Let me first again welcome to the chief guest of the day, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, former Union Cabinet Minister, Government of India, for traveling so far to MANUU and gracing with his encouraging presence in this very august gathering of the relevant discussions. You consented to travel, sir, to this very beautiful university and spending us with a day far from Delhi to Hyderabad is an honor for the entire university. On behalf of the university, Maulana Azad National Urdu University, I welcome you for this gathering. A large number of teachers, students are there in this gathering today. We wish you that you spend a memorable day. We remember that your earlier visit were one of the very important visit in the university, and we hope that university will benefit under your guidance. The students will get a lot of benefits in terms of various expectations they have. Thank you so much for coming to the university. I welcome the Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab, for having given this courage, encouragement, and all supports whenever we needed to organize this important seminar, and also inviting Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, being with him in this session. Thank you so much, sir. Welcome you into this program. I welcome the keynote speaker, Professor G. Aloysius, who is, as all of many of you know, that one of his most celebrated writing, Nation Without Nationalism, which we read as a student way back 20 years ago. He remains to be one of this eminent scholar to us, and I'm very happy as an institutional member that he agreed to come and ready to deliver keynote address. We'll be having his discussion throughout the day. So welcome you, sir, here. Dr. Sunil George, who is director of Symbiosis Law School, one of the esteemed university, Symbiosis University. This is the beginning of a collaborations with MANUU and Symbiosis, where our students are going to join. Thank you so much for coming here. Without taking much time, I request now, let me begin that I kindly invite Professor Ishtiyaq Ahmad Sahab, the Registrar of the University, to say a few words and also welcome the chief guest of the University. Thank you very much, Dr. K. M. Jiauddin, convener of the National Seminar and head of the Department of Sociology. Indeed, it's a great occasion that Department of Sociology, along with Department of Women Studies, is holding a national seminar on sociology of subaltern communities, revisiting Dalits, minorities, and tribals in South Asia. And on this occasion, the department, the university has invited a good number of scholars. And I'm very happy that this important national seminar is being chaired by our Honorable Vice Chancellor, Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab. And as inaugural address, we have a very eminent personality. He needs no introduction. On this occasion, we are very thankful that Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, former minister, cabinet minister, Government of India, has graced the occasion. He has agreed to our request. Please give a big hand to Professor Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab. Again, we have a very eminent social scientist, Professor G. Aloysius Sahab. He has worked a lot in the area, and he agreed to be part of this national seminar as keynote address. Next, we have Dr. Sunil George. He's director. He's Symbiosis Law School. He's again a social scientist. So a good number of scholars from various universities, experts, and those who are really working in this area, as well as our good number of our scholars, teachers, they are part of this national seminar. And I do hope that this national seminar will really
ponder upon the issues that is involved when we study the concept of the subaltern and their various issues. In fact, subaltern studies, it's a sociological approach that examines the lives of socially, economically, or politically marginalized people. The sociology of subalterns communities, particularly Dalits, minorities, and tribal groups in South Asia, have been pivotal in understanding the intersections of caste, class, ethnic, and gender in a historical perspective. I do expect that our scholars, our experts will really debate and engage our scholars, our teachers, and all those who are participating as far as this concept of various concept and the aspects goes to study the sociological perspective of the subaltern histories. Thank you very much. Thank you much, sir. सर, जनाब नकवी साहब को अर्ज करूं कि हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मौजूद हैं. प्रोफेसर अरविंदर अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया से दिल्ली से तशरीफ़ लाई हैं. प्रोफेसर अनूखे रेखाचारी, प्रोफेसर गुलाम दस्तगीर फ्रॉम Pondicherry. We have Professor many other Professor Nagaraju, Professor Piang, and faculty from across the southern India. They have come. I also wish to mention here that this is the first attempt that Department of Sociology, Department of Women Education has taken up this task of focusing on subaltern community in context. As I am told by many South Indian friends that this is this one such beginning of discussion in southern context. So these deliberations are in social sciences in terms of talking. Let me also welcome all my senior colleagues of the university, Professor Ali Masraf, Habib Sahab, Professor Afroz Alam, Professor Kazmi, Professor Shahida, Dean of the school. We have various other professors who have joined here to listen and encourage the discussions. I also like to mention that the entire university administration is also here with us, the provost, proctor, and other team members. Thank you so much for giving all the support in organizing this conference. I have a special mention and concern to discuss that the Honorable Vice Chancellor has given a special support in terms of organizing this event and asking every moment about the visit of the chief guest today, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab. This is one of important occasion when we wish to have him here. And I have, on behalf of many students, to just very humbly and kindly, one issue to mention before the chief guest, that Maulana Azad National Urdu University has a large number of students who come from Urdu medium background, and many of them are from first generation families, first generation learners, and you are sure and you are aware of all the kind of affirmative support the government of India gives to all central universities, including MANUU. So will it be possible, and is it correct that I very humbly request and put before you that, sir, Maulana Azad National Fellowship is one fellowship that is very important, and I'm sure sir will help us, as the Vice Chancellor Sahab has always stood with the students, giving all the support, financial support. Maybe these kind of fellowship will encourage the students who come from this background, socio-economically background, and encourage the nation in the process of nation building, inclusive growth, and development of the country. With this brief note, I now kindly request to the next guest, Dr. Sunil George, to briefly share his thoughts today. Dr. Sunil George is the director of Symbiosis Law School, Hyderabad. Sunil sir, very brief, please. Good morning, everyone. Honorable former Minister Mukhtar Abbas Naqvi sir, Honorable Vice Chancellor, respected Registrar, Ziauddin sir, Department Head, Department of Sociology, Deans, esteemed academicians coming from different parts of the country, G. Aloysius sir, and research scholars, people who are going to present papers today, and my dear students.
First of all, I would like to congratulate the Department of Sociology and the Department of Women Education for having this very, very relevant and contemporary conference under the title of Sociology of Subaltern Communities and Revisiting Dalits, Minorities and Tribal Studies in South India. Being from the Faculty of Law, uh, I would like to keep my discourse as an intersection between law and sociology. And I would like to mention here that if we look at the Constitution of India, the Constitution of India provides a plethora of rights for all of these stakeholders. Now, Article 14 says right to equality, and it says that every person in this country, irrespective of his religion, irrespective of his caste, shall be treated equally. And Article 15 says that there shall be no discrimination on the grounds of religion, race, place of birth, or any of them. Article 16 further says equality in matters of public employment. Article 17 tries to abolish untouchability and says that any practice of untouchability would be not kind of, something which we would tolerate. Again, minorities have their rights, right to practice the religion, right to establish educational institutions. Now, if all of these plethora of rights are there, then where is the problem? The question is, where is the problem? The problem lies in understanding that some of us are not equals, and equality cannot be among unequals. Equality has to be among equals. And therefore, like this topic and this is very, 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 very relevant, because when you say, look at the country from Kashmir to Kanyakumari, we cannot have one straitjacket formula which would address all of these stakeholders. It has to be different. The approach has to be different. What is relevant for South India may be not relevant for the north of the country. Similarly, even in South India, the different states, okay, may have a different culture, may have a different sociological background. And therefore, when laws are made, laws have to be made to address these communities, these stakeholders, understanding the sociological, cultural aspects of where they come from, where their roots are. And there is a need to understand the grassroots realities. And any law which is made in the absence of these would be, laws which will have no force. Similarly, judgments which are given by the courts would be judgments which are given in ivory towers without having the ground reality. Just to illustrate one example, I go to the judgment of the Sabrimala case. Now, the courts, it was a 5-bench judgment where the court said that women should be allowed in a particular temple of Kerala without understanding the sociological, without understanding the norms, without understanding the concept behind why they were restricted in a particular place of worship. Now, here, very interestingly, the dissenting judgment was again given by a lady judge, Justice Indu Malhotra. Now, Justice Indu Malhotra said that women should not be allowed in that particular context. And after the judgment, there was a lot of rejoicing in this country, a lot of things, but the fact remained that laws made without understanding the ground realities may not be practical. And therefore, once again, I would like to kind of, congratulate that we're having this very, very contemporary topic on sociology of Dalits, minorities, and it's very, very relevant. Thank you for having me here, and I'm sure that all the discussions, debates, and deliberations which would happen during this conference would be helpful for all of these stakeholders. Thank you. God bless. Thank you, Dr. Sunil. Now I request Professor G. Aloysius
the keynote speaker of the session to deliver his keynote address, Professor Aloysius. Professor Aloysius was a visiting faculty at Jamia Millia, University of Hyderabad, IFLU, and many other esteemed universities. Welcome to you, sir. Honorable Vice Chancellor, Nakwisa, dignitaries, friends, and younger colleagues. I'm grateful for this welcome. I'm in this position of having to give a keynote address in 10 minutes. It is good for me. Anyway, I'll be here for the whole day, so I could have a discussion. I straight away say a few things which I feel should be said. In the morning, I attended pre-inaugural sessions. I'm suppose the rest of the technical sessions will also take along the same lines. They were all very concrete, micro, specifically kind of addressing problems, etc. And then the students did wonderful work. But my job here is to see what is the larger picture. Where is the forest in all this? Does the forest has any influence on the individual trees, or the trees hit back the forest, etc.? These are some of the things which I have been worried with for the last several years. And I'll put some ideas across to you. It may lead to some more confusion, which is better than adding to the knowledge already you have. Social science is a double hermeneutics. You people have already knowledge of these things, and I am sort of trying to confuse you a bit. We have said this is about sociology of subaltern communities. There are supposed to be some communities called subaltern communities. And they have been given the enumeration below: Dalits, minorities, and tribals, and OBCs. Okay, OBCs, women in a certain real sense. Now, apart from these subaltern communities, what other things are here in this country? I mean, you see, the problem is this. In every country, there will be people marginalized, there will be people out of the mainstream and so on. There may be some 5% or 10%, which can be easily be rectified and solved with the researches we have been doing. Go and find out what they are doing and all that, how they are doing, and then add some help and all that kind of thing. At one moment, there are no more Dalits, minorities, etc., etc. But here we are talking about a situation in which most of the people are the subalterns. Most of the peoples are subalterns. And earlier, under Jawadi's leadership only, I came for a conference on social exclusion, in which I found there is not a single person in this country who doesn't claim that he is not excluded. That means everybody claims he is excluded. And we have also the third discourse called backward classes. The so-called backward classes in this country constitute nearly 80-85% of the population. So to whom are they backward? If these people are the subaltern, and who are the non-subalterns, elite? Do they have any connection between these two? Is there any kind of framework that in which both the communities operate and so on? That we find this is a very bizarre situation in which we have a nation of subalterns. The other implication of this is sociology of subaltern communities is indeed the sociology of India. We don't sort of feel defensive or a kind of subterfuge and all that, say that we are dealing with the subalterns and the others. This is the country, this is the people of population, and this is what we are. And so how do we kind of grapple this situation? First of all, what is the sort of
nature of these subaltern communities. They are subaltern today. They were subaltern yesterday. They were subaltern some 30 years ago since we started paying attention to them. And they will remain subaltern for the next, I don't know how long, many years, as long as there are students to come and do researches and then people to organize seminars and so on, as nothing is going to change. So what's the idea of all this? For whom is this an employment for us? When there is some 80 to 85% of the people are minorities, what is this minority? I don't know. I really don't understand. And there is some, what is that? He rightly said some concessions about running their own institutions. And then with the 101 spikes against that to see it doesn't run properly. Dalits will remain Dalits endless time, so you cannot change them. You can uplift them. You can make them rich, but you cannot. So what happens is when you don't relate it to the macro structural and cultural scenario, either you take to an anthropological description, a colonial type of description, how they do, how they nicely they do, how they celebrate this, that, and all that kind of thing. Or celebrate it in the name of an identity problem. This is that will remain like this forever and so on and so forth. There will not be any critical insight into all this, so that, which I believe, all these things should be abolished. There should be a time we should envisage in this country, there is nobody called subaltern. There may be some marginal poor people sometimes, and after some time they change their things and some other people become poor. There's a kind of rotating dynamics and all that. But on the other hand, what we have is definitely a birth-based. You are born as a Dalit and you will remain a Dalit. You better celebrate it if you want to survive in that. Minority is also the same case. And there is no rotation and all that. The group will remain just like that. Now, under such circumstances, what do we do? Further, subaltern presumes there is something elite. That is the classical dichotomy that we were told about subaltern studies from history. But apart from that 6-7 pages of first volume by Professor Ranajit Guha, my friends from history, that the nationalists failed to hegemonize the mass of people struggling for empowerment and enablement and so on. That is the crux of subaltern studies, which in the rest of the volumes were completely sabotaged and landed as a post-colonial studies. You see. Therefore, we would rather be well off if we systematically study who are these people who are subalternizing us. Who are the people who are making us backward? I am supposed to be socially backward. To whom I am relating, I am socially backward. Please come forward. This kind of half-truth and half-articulated or half-understood kind of thing and so on will not serve our purpose unless we start all our researches with a strong critique of the existing situation in the macro scenario. Because that is where all ideology operates. And if you, having accepted that ideology at the macro level and all the different higher levels, and then say within that our rights for this, our rights for minority rights, our rights for human rights, our rights for thing, it's only a kind of academic exercise. We need to see how did this subalternization came about? How did it come about? It's a history. It's not some, Deus ex machina or something. It comes down from heaven and we will remain subaltern forever. So there will be always some ministry for subalterns, ministry for minorities, ministry for anything, permanent employment, and they'll keep on doing that. But all the people will accept that we are a little second class here. We are a little bit, we'll quietly do things which we want, but we should not aggrandizingly project our culture as the national culture. Because what has come to be accepted as the national culture is purely sectarian,
a few communities based on their way and view of life. On their way and view of life. This is the problem. You can in your private space, you can be in whatever way you want. But in a public space, protocol is that the sectarian way and view of life has become legitimate official way and view of life, way of speaking, way of thinking, way of acting, and you better fall within that. Now this, at least academic people in an academic seminar, an academic platform has to understand what are the crises involved that and integrate it within their researches. Without linking, who are the agency about this subalternization? And what are the process by which they do? And what are the process by which these are all made normal, natural, and accepted? There are upper caste and lower caste. What is it? Aren't there human beings in the country? Are there only upper caste and lower caste? You know the point. Unless we meet the structural, cultural reconfiguration, nothing of this will be solved. I'm saying this to the what you call sociology students who are supposed to explain reality, also understand reality, but also transform reality. Transform reality. Anthony Giddens, the basic textbook, very basic textbook, Anthony Giddens gives three people, what he call, the first is the positivist method, second is the interpretative method, third is the transformatory method. This is the three accepted also by Habermas, three ways of learning things and knowing things and so on. Now all these three has to be brought down, and the macro picture needs to be constantly be kept alive and in analysis. Otherwise, we play all their macro articulated or unarticulated within a very small, narrow thing that this problem shouldn't be solved or not, how to solve this. It won't get solved. What will happen is like a dog's tail. You make it straight and keep holding it, and after you turn this side, the whole thing rolls back. You see? Now, I have a lot of things to say, but sir told me it is only a time is limited and so on. The most important thing is how in history we were subalternized. How in history we are subalternized. Entire country has been subalternized. Entire people's religions have been subalternized. People's languages have been subalternized. People's culture have been subalternized. People's food has been subalternized. Now, in that context, what more we are all talking is about empowerment. Our share in getting jobs, reservations, this, that, and so on. But when is going to be our emancipation as a country? The coming into existence of all nations is characterized by the empowerment and the ennoblement of the mass of people. Here the mass of people is about a subject of our conference. And these people have to be enabled and emancipated and ennobled. That is the objective of our conference and our discussions and our micro-analysis, macro-analysis and meso-analysis and so on and so forth. Unless these keep, and we are committed. We are committed for the emancipation. We are not neutral like social science. Please remember this. We are not neutral. We are not, no bias. I am biased towards the emancipation of the mass of people. Then what changes is our methodology changes, our data collection changes, the way we codify our research problem changes, everything changes and so on. This is a kind of propositional statement. I don't want to bother you more than that. And if we have some problems, we can have, and I'll be part of the panel later and so on. And thank you very much for the opportunity the university has given me. Thank you. Thank you, Professor Aloysius. History as being subalternized. We will have a lot of discussions in the panel discussion. He will be with us. Without taking much time, before I invite the chief guest, I request IMC to play a Tarana of the university in the honor of the chief guest, and please do play. And this, as you know, the Tarana is written by the Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan Sahab.
ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। आओ सफ़र यहाँ से करे आसमान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। इल्मो कमाल फज़लो शियारो शूर तक फैली है दिल नवाज महक दूर दूर तक। मिलता यहाँ निसाब है सारे जहान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। हर नक्शो रंगो बू से करो अपनी गुफ्तगू, आजाद दरसगाह की है ये भी जुस्तजू। सब फासला मिटाते चलो दरमियान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ग़र्बो जुनूब से होके शर्क़ो वो शुमाल से आगे बढ़ो ख़याल मिला दो ख़याल से। चर्चा हो कायनात में हिंदुस्तान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। फसले सदा बहार से बस्ती बसी रहे, मिलकर दुआ करो कि ये खेती हरी रहे। साया रहे सरों पे किसी साहिबान का, आओ सफ़र यहाँ से करे आसमान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। बहुत शुक्रिया। आप तमाम से गुजारिश है कि एक बार और ज़ोरदार ताली हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर
हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जिन्हें पद्म श्री से नवाजा गया, उन्होंने इस तराने को लिखा है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पद्म श्री वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब ने ये तराना यूनिवर्सिटी के लिए लिखा और इस तारीख़ में ये बहुत अहम तराने के तौर पर देखा जाएगा। अब वक्त को ना लेते हुए मैं आज के ख़ास मेहमान इनागुरल एड्रेस के लिए जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से एक गुजारिश करता हूँ, जो तकरीबन 20 साल 2001 से 2022 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, डिप्टी लीडर ऑफ हाउस रहे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रहे। सर का खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Respected by Sayyid Ainul Hasan Sahab, Ziauddin Bhai, Ishtiaq Ahmed Sahab, Dr. George, हिलाल साहब और यहाँ पर मौजूद जो हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी का ये सेमिनार है, इसलिए मैं उर्दू में और हिंदी में मिला करके बोलूँ तो इजाज़त दूँ आपकी है कि नहीं? क्योंकि अभी इंग्लिश का तो बहुत डोज हो गया और अच्छा हुआ काफ़ी, जिस तरह से जो सब्जेक्ट को लेकर के जिस तरह से हमारे कीनोट जो स्पीकर हैं उन्होंने और भी जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत डिटेल में जो है वो चीज़ों को समझाया और बताया भी। ख़ास तौर से जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर के उसकी गहराइयों के साथ उन्होंने उसका तबसरा किया है। मैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो मेरा हिंदुस्तान है वो एजुकेशन का, तालीम का की शक्ति केंद्र है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तालीम का शक्ति केंद्र या एजुकेशन का पावर सेंटर है कि हमारी ये सदियों पुरानी विरासत है, चाहे वो तक्षशिला की तालीम रही हो, चाहे गुरुकुल का गुरु मंत्र रहा हो, और या सर सैयद अहमद खां के ज़रिए तमाम उस वक्त के जो हालात थे उनको बदलते हुए, परिवर्तन करते हुए और एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज का जिस तरह से उन्होंने जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर से जाना जाता है वो किया हो। ये मेरे हिंदुस्तान में ही सारी चीज़ें हुई जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए समाज के सभी तबकों के लिए, ख़ासतौर से कमज़ोर तबकों के लिए इस हिंदुस्तान में हुआ है। और आज भी जो है वो मैं देखता हूँ कि 140-45 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और मेरा हिंदुस्तान अकेला मुल्क होगा जिसमें कि दुनिया के सभी मजहबों को मानने वाले लोग होंगे। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, बहुत लंबी जितने भी मजहब आप गिन लीजिएगा हिंदुस्तान में उसके मानने वाले होंगे। और उसके साथ ही साथ मजहब को ना मानने वाले भी हैं यहाँ पर, कम से कम मेरी समझ से 8-10 करोड़ तो हैं जो लिखते हैं कि हम किसी मजहब को नहीं मानते। ये मेरे हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। और इन तमाम सर्कमस्टांसेस के साथ अगर मेरा मुल्क जो है, मैंने कहा कि जो तक्षशिला की तालीम रही हो सदियों पुरानी, जो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, गुरुकुल का गुरु मंत्र रहा हो, और उसके बाद जो एजुकेशनल एक क्रांति, मेन स्ट्रीम एजुकेशन की मदरसे थे, गुरुकुल वगैरह रहे हैं शुरू से ही, लेकिन उसके बाद जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन की को लेकर के जो क्रांति हुई उसका मुखालफत भी हुई। जैसा आप जानते होंगे कि सर सैयद अहमद खां साहब को कितनी मुखालफत झेलनी पड़ी थी, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने ठाना था कि हम जो है वो
जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो तालीम है, उसको खास तौर से मुस्लिम समाज तक पहुंचाएंगे। और मैं कहता हूं ना कभी कभी कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। तो इन तमाम शख्सियतों ने जो धाराओं की धारा थी उस वक्त, उसके बहाव को बदला है। आज जो है वो, क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन के तमाम इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़े तादाद में अफोर्डेबल एजुकेशन दी जा रही है। अभी बात आई स्कॉलरशिप की भी, फेलोशिप की भी, ये बात सही है, कुछ उसको लेकर के है लोगों में, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में मुल्क में जो एक शिक्षा क्रांति होनी चाहिए, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन है, वो आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है। उससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज और है, जो हमारे मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में जो कोर्स हैं उनमें वो होगा ज़रूर। आज जो है वो डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बहुत तेज़ी से साथ दौड़ शुरू हुई है। और ये न सिर्फ मेरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आज जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट नई जो हमारी जनरेशन है, नए जो हमारा यूथ है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा मानना है कि जो ओरिजिनल जो हमारी काबिलियत है, उसकी जो ताकत है, उसका जो पावर है, उसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टावर से जो है वो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसकी अपनी ओरिजिनल जो काबिलियत है वो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल एजुकेशन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस वक्त की 1875 में सर सैयद अहमद खान साहब ने जो है वो, जिसे आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं, उस वक्त भी उनकी सोच जो थी लगभग उसी दिशा में थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो एजुकेशन का होना चाहिए वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। आप पूरा एकदम मदरसे का जो पूरा एक दौर था, उससे जो है वो आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन के दौर में आप उस सोसाइटी को, समाज को ले जा रहे हो जो कि उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो दौर आया और उसके बाद जो है वो तमाम इदारे, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तमाम और भी जो सेंटर्स हैं, उन्होंने अपना इस दिशा में काम किया। और इस वजह से मैं देखता हूं कि आज जो है वो हमारे मुल्क में जो लिटरेसी रेट है वो कुछ स्टेट में, ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में बहुत कम है, थोड़ा सा बैलेंस में दिक्कत है। लेकिन सब मिला करके मैं मानता हूँ लिटरेसी रेट जो है वो आज मेरे मुल्क का बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, अगर आप हमारे जैसे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके साथ देखें तो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई जो इजाद है, नया जो हमारे सामने जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको जो है वो बुद्धि की बेहतरी के लिए होना चाहिए, बुद्धि को बंधक बनाने में नहीं होने देना चाहिए। अब कभी कभी तो दिमाग पूरी तरह से कैद में आ जाता है ये आज की तारीख में मैं देखता हूं कि हम लोग, याद रहता था पहाड़ा की जो है वो 12-12 तक का, आगे तक का याद रहता था। आज की तारीख में अगर किसी नए बच्चे से पूछो कि 4 4 जा
तो वो इमीडिएट मोबाइल खोलेगा और 4000 निकाल लेगा। अब हम तो कहते 4 12 4 बोल देते थे, आदत था। नहीं है ये बिकॉज ऑफ दी, ये जो हमारा गूगल क्रांति है वो अच्छा था, वो भी अच्छा है। लेकिन मुझे एक किस्सा, हमारे एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, वो बताते थे कि अमेरिका गए वो, और अमेरिका से जब हिंदुस्तान लौटने लगे तो जो काउंटर था टिकट का, तो वहां पर जो है वो काफी भीड़ लगी हुई थी, वो भी लाइन में लग गए। तो पूछा उन्होंने कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उनका साहब कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, फिर वो उसके पास गए जो वहां पर थे काउंटर, उससे कहा भाई कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो उनका कि कैलकुलेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है कि ये तो उन्होंने उसी तरह से कुछ कैलकुलेशन था कि 9 × 9 कितना हो, उन्होंने पहाड़ा पढ़ा और बता दिया कि साहब ये होता है, और जीनियस पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो अब तो हम फंस जाते हैं। अभी हम लोगों को भी जो है वो अभी हाथ से ले लो मोबाइल और कंप्यूटर, तो लगता है कि हम तो बेकार हो गए अभी। तो हमें जो हमारी ओरिजिनल काबिलियत है उसको आर्टिफिशियल काबिलियत से उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। वो अपनी जगह उसकी अहमियत है और रहेगी, और आने वाले कितने हो जाए, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो जाए, उसको जो है वो हम जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में भी जो अभी जो नया बजट आया है उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के डिजिटल और भी जो लिटरेसी है उसके लिए जो है वो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का बजट अलग से इस बार किया गया है। उस डीप फेक ये वो बहुत सी चीजें, बहुत खतरे भी हैं उसके, ऐसा नहीं है, मतलब इस राह में जो है खतरे भी बहुत है। और बार बार अभी आप कल मोबाइल में पहले से बताते हैं कि कोई कहता है कि आप ज़रा डरे बचे रहिए, आपका कहीं अकाउंट में ना कोई हैक कर ले, कोई आपका जो है मोबाइल ना वो कर ले, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये पहले इतने चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आज जो है वो इस दिशा में काम हो रहा है। और अभी जो हमारे कीनोट स्पीकर थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें दलित हैं, उसमें बैकवर्ड सेक्शन है, और उसमें कम से कम जो है वो जो पुअर सेक्शन है, जिसे कि आज हमें एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जो है वो जोड़ने के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करना होगा, और कर रहे हैं। सरकारें करती हैं, इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पे करते रहते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि मैंने जब जोर देना शुरू किया कि भाई स्कॉलरशिप जो है वो खास तौर से जो गरीब और खास तौर से बच्चियों तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले, फेलोशिप मिलनी चाहिए, तो मैंने उसका एक स्टडी करवाई, और मुझे जो जानकारी आई, आप लोगों को इस बात को जान करके ताज्जुब होगा कि जानकारी आई कि असम में मैंने कुछ दूर दराज इलाकों में करवाया, कुछ वेस्ट बंगाल में, यूपी में, तो लोगों ने कहा कि साहब वहां पर जो है वो जो बच्चियां हैं उनको प्राइमरी तक भेज दिया तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद माँ बाप जो है कहते हैं भैया हम अपना घर नहीं चला पाते, कहाँ से इनको हम एजुकेशन दिला पाएंगे। तो उनको सेकेंडरी तो बहुत बहुत बड़ी बात होती थी, और उसका नतीजा होता था 80%, 90% ड्रॉप आउट रेट खासतौर से लड़कियों का आता था। मैंने प्रधानमंत्री से ही बात की, सरकार से ही बात की, हमने कहा कि हमें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम
सारा एम्पावरमेंट एक तरफ है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट एक तरफ है। जब आप उसको एक इंसान जो है वो एजुकेशनली एम्पावर हो जाएगा तो वो अपने एम्पावरमेंट का रास्ता चुन लेगा, और उसके बाद जो है वो फिर हमने इस पे कोशिश करी। हमने बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो जिन्हें पता ही नहीं रहता था। आपके यहाँ भी मैं बार बार फोन करवाता था, लोगों को भेजता था कि भैया जो यहाँ बच्चे हैं देखो स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो शुरू में आया नहीं नहीं इतना तो नहीं ले रहे हैं, फिर कुछ आया कि ले रहे हैं, अभी नहीं अभी तो तो फिर बहरहाल वो हुआ। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा मुझे यहाँ आपने आने का मौका दिया। और देखिए, एक तमाम तरह के जो चुनौतियाँ होती हैं, हमारी जितनी भी अगर आप देखें तो जनरेशन है, वो जनरेशन जो है वो आप जितनी हमारे जो जिन्हें हम आज हीरो मानते हैं, लीडर मानते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, चाहे सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के APJ कलाम साहब से लेकर के मोदी जी तक के सब लोग बहुत संकटों के साथ, बहुत ही परिस्थितियां उनकी जो है बहुत करके जो है वो आगे बढ़े हैं। इसलिए उन चुनौतियों को पर जो है वो मुझे लगता है कि आप भी जो है वो विजय पाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि वही हकदार है किनारों के जो बदल दें बहाव धारों के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। Thank you so much, sir, for your valuable ideas and also reminding how education is very important. The efforts being done by the ministry in terms of bringing educational empowerment among the marginalized is very important, and we stand by. In fact, Maulana Azad National Urdu University is blessed to have such kind of empowering process, and the leader of the university, Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab, Padam Shri, Professor Hassan Sahab is one of the such leader who has taken this task to take this university at another higher height of the success, bringing fruit and academic excellence in the university, despite of the fact that this is a national Urdu university. People think that this is Urdu university, but when you come to this university, you will find this is one of the such beautiful university which is meant for Urdu, but people who are here are really very excellent. We are also proud of having large number of diverse faculty members from across the country who represent this university across the world, and we are ranking in one of the good universities. We are looking forward to be part of the 100 universities in the NIRF ranking. We have A+ accredited NAC. These are some excellent things which comes often only when you have a very wonderful leader who gives you a free hand and gives a vision to work free. And perhaps that is the reason that most of us feel safe, free, and doing our own work without taking and putting things into context. Let me also tell you that Professor Ainul Hasan is one person under whose guidance we have taken many very interesting research, many interesting seminars, and this is only who allow us to do this. I respectfully request Professor Hasan Sahab, the Padam Shri, to deliver his presidential address. Sir. बेनाम खुदावंद जान खिरत, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, our chief guest of this morning, Professor Aloysius Dr. Sunil George, Professor Ishtiaq Ahmed, and Dr. Ziauddin, head of the department, Sociology. You are listening to some good talks.
But, if all these talks are converted into reality, that would suffice the matter. Well, let me also tell you why this university is different from other institutions. One major thing is that this is a central university and fully funded by the central government. There are many other universities fully funded. But the quality of this university is that we have maintained diversity. And of course, a diversity with clear vision and with a biodiversity pond. So all species are also visiting our campus. We are not just one campus. For information, there are 33 off campuses. We have regular mode as well as distance mode. And now we are starting online mode. So all three will go together and we will explore more and more possibilities for having more and more campuses all over the world. All over the world, when I say that it is likely to be across the seas also. So the quality of this one more quality of this campus is that all political people, when they visit our campus, they become apolitical. And well, you have not taken note of it, you see. Naqvi Sahab has already mentioned that, look, he was about to release 1 crore for our students, training to compete and to find ways for entering into the mainstream. But we were unfortunate. And then something happened and it went out of our hand. This I must mention, and he knows very well. 2 things are there. Our university will progress, no matter. We will find our own ways. We have combined students, teachers from different walks of life, from diverse background. Urdu is our supply line. We cannot give up this title, which is National Urdu University, and with national character. So therefore, we will cater to the highly marginalized sections of the society. We are committed to, we are bound to. Our commitment on one hand, on the other hand, we will maintain a discipline which is behind Urdu language. बहुत बड़ी आपका एक बहुत बड़ा कल्चर आपके उर्दू के पीछे है, उसको भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. हमने जो रेशियो है और जो मैंडेट है पार्लियामेंट का गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली, हमने उन्हें यहाँ वो रास्ता दिया है और उसकी वजह से धीरे धीरे उनका रेशियो इतना बढ़ रहा है. अभी 45-55 का रेशियो है. आप आने वाले दिनों में इसको 50-50 पाएंगे. उनके एडमिशन्स में भी हमने काफी कंसेशंस दिया है और पेरेंट्स में उनके एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है कि उनकी बच्चियां जब हमारे कैंपस में हैं तो वो सेफेस्ट हैंड में है. ये बड़ी बात है जो आपने उनको गारंटी दी हुई है कि ये बच्चियां हमारे लिए
बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा उनकी कीमत है हमारे लिए। Now, this gathering is about to analyze what is present day situation. हमको देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ आइसोलेशन में देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमको उन सबको देखना पड़ेगा जो अपनी गुर्बत की लकीरों से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आज जो आप जमा हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, वो इसको एनालाइज करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे की स्पीकर ने की। हम क्या सिर्फ यहाँ डिस्कशन के लिए आए हैं? हमें अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आउटरीच प्रोग्राम में आप लोग हिस्सा लीजिए। देखिए, हमने वो रास्ता निकाला है जिसमें आप आउटरीच कर सकते हैं। पिछले 2 महीने से एक एयर कंडीशन बस कैंपस में खड़ी है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिक्वेजिशन कहीं से नहीं आया है। चलिए, दानिश साहब की इंफॉर्मेशन को मैं एक हैसियत देता हूं और मैं समझता हूं कि ये एक रोशनी है। आई होप कि आप लोग यही सोशियोलॉजी होगी आपकी कि आप जाएं दूसरी जगह देखें, उन लोगों को कंबाइन करें अपने साथ, और वो दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, जब आपका कैंपस दूसरे कैंपसेस से वाबस्ता हो जाएगा। उसको आपस में मिलाइए आप कैंपसेस को। 2 चीजें यहाँ कही गई हैं जिसके लिए मैं नकवी साहब थोड़ा सा अटेंशन आपका चाहता हूँ। पता है आपको, हम और नकवी साहब एक साथ चले थे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी ये बात कही थी। वो हुआ ये कि हम दोनों इलाहाबाद से चले थे। हमने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। नकवी साहब के साथ हमारा काफी अरसा गुजरा है, बचपन तो गुजरा ही है, और हम बर्फ की चिड़ैया खाने से लेकर और धूम धपाड़ा करने तक सब एक साथ रहे। मगर हुआ ये कि हमें इनमें एक डिफरेंस पैदा हो गया। वो ये हुआ कि इन्होंने 1978 में जाके एयरपोर्ट पर हवाई जहाज ले लिया और मैं जाके एक पैसेंजर ट्रेन में बैठ गया। दोनों आए दिल्ली तो आए, मगर हमारे लिए दोनों के जो ट्रांसपोर्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैं समझता हूं कि बात हमारी वही है। हम भी वहीं से उठ के आए थे और हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनकी बात ज्यादा मानी जाती है। नकवी साहब से मैं दरखास्त करूंगा 2 काम हमारा कर दें। इनके जमाने में मौलाना आजाद फेलोशिप थी, उसको रिस्टोर करवा दें। और एक दूसरी दरखास्त करूंगा, जो इनके एक टेलीफोन की बात है, सिर्फ एक टेलीफोन की बात है। हमारे पास से मौलाना आजाद चेयर ले ली गई थी, लेकिन हमने जब ज्वाइन किया तो हमने यूजीसी से रिक्वेस्ट की और वो 3 साल के लिए मौलाना आजाद चेयर हमको मिल गई थी, जिस पर हमने मुख्तलिफ लोगों को उनके हिसाब से अपॉइंटमेंट किया था। अभी फिर वो कई बार हम लेटर लिख चुके हैं। वो मौलाना आजाद चेयर, हमसे बड़ा हकदार कौन हो सकता है मौलाना आजाद चेयर। मैं चाहता हूं कम से कम हमारे सामने ये 3 साल के लिए और मौलाना आजाद चेयर आ जाए। प्लीज हमारे लिए इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए, और ये बहुत खुशायंद होगा। बहुत काम हुआ है, कल्चर पर काम हुआ है, यहाँ लिंग्विस्टिक्स पर काम हुआ है। अच्छे अच्छे लोग रहे हैं यहाँ पर मौलाना आजाद चेयर पर। उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं जो छप भी गई हैं, और न जाने कितने एडिशन इसके होने वाले हैं। सो मेरा ये कहना है, जिस दिन मौलाना आजाद चेयर रेस्टोर होगी, उसका टर्म न देखा जाए, बल्कि है
अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि हमने कई मीटिंग्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर से, ये जो हमारी पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है इसको भी रिस्टोर करवा दें। ये हम कैसे बताएं कि हम यहाँ इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं जहां हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि हम मिलजुल के काम करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी जो आते हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको एक अंदर से इंस्टिंक्ट है कि हम आगे बढ़ें। उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे, कभी कभी मुझे बड़ा वजद होता है जब मैं देखता हूं इतनी खूबसूरत अंग्रेजी बोल रहे हैं, कहां से आई है? ये चाहत है दिल की, मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। इनकी हेल्प अगर न की गई तो हमें वक्त भी माफ नहीं करेगा और हमारा खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि यहां पर सिकुड़ के न रह जाएं, जीने की राह खूब से बेहतर तलाश कर, कतरे की सम देख समंदर तलाश कर, और हाथों की हम तदबीर के कायल हैं। हाथों की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें फजूल हैं, हाथों की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें फजूल हैं, बख्शे जो जिंदगी वो मुकद्दर तलाश कर। So with this hope, we don't have time to go on, deliver long speeches, but I am again thankful to all these speakers and particularly our chief guest, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, तशरीफ लाए यहाँ। उनका अपना वक्त देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़ियाउद्दीन साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो मैं न कर सका वो इन्होंने कर लिया। ये प्योरली ज़ियाउद्दीन साहब की कोशिश है कि मेरी तरफ से नहीं है। मैं तो सच्ची बात है, हकीकत कहने में कोई एतराज नहीं है कि भाई ये काम ज़ियाउद्दीन साहब ने अपने डिपार्टमेंट से और नकवी साहब को आज जो बुलाया है, इसका सेहरा उनके सर है। आप लोग जाइए, फूल लीजिए और इनके सर पर सेहरा पहना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। इस ज़िमन में मैं प्रोफेसर अरविंदर अंसारी मैम का भी जिक्र करता हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे कई सारे माइनॉरिटी स्टडीज़ के कॉन्फ्रेंसेस में शामिल हुए हैं। दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी हमारे कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, और हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी स्टडीज़ की जो पूरे एक विंग है रिसर्च में, वो नेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। और इस ज़िमन में हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, हर एक की गाइडेंस की ज़रूरत है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम सर हियर। And now I quickly request Dr. Hilal. There are 4 very important minds behind this conference: Professor Amina Tehsil, Dr. Shabana Kesar, Professor Shahida ma'am, Dean of Social Sciences, my colleague Dr. Hilal, that have worked behind this entire conference. Entire execution was done then, and I thank all of them from my bottom of my heart that you all agreed, consented, and remain with me for all the decisions we took. I quickly request Hilal to be very brief and present vote of thanks. Thank you, Zia sir, for giving me the opportunity to thank all the guest speakers and participants. It's truly my pleasure. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab for accepting our invitation and making it convenient to attend this seminar. His presence has truly graced today's inaugural session. We are deeply thankful to Professor Aloysius for delivering the keynote address and setting the perspective for the discussions we have throughout this session. We are special thanks to Mr. Sunil George for joining us today despite his academic and administrative commitments. Our sincere gratitude to Vice Chancellor Professor Syed Ainul Hassan Padmashri and Registrar Professor Sheikh Ishtiaq, not only for being here today to grace this seminar, but also for their able and dynamic leadership in creating an environment that fosters academic excellence. Their commitment to maintaining a flexible, liberal, and intellectually stimulating space has made it possible to host
important academic events like seminar which addresses socially significant issues. We are also grateful to esteemed speakers of plenary and validity sessions, Professor Arvinder Ansari, Professor Nagaraju, Professor Lam Khan Pyong, Dr. Tausi Fatima, Professor Ghulam Dastagir for accepting our invitations and enriching this academic event. A big thank to our wonderful participants, including research scholars and faculty members from various universities across South India. We appreciate your efforts in writing, presenting papers at seminar. A special thanks to those who have submitted their full papers for publishing a book in the coming months for a meaningful academic outcome of this seminar. We also extend our thanks to all deans, directors of the departments and other faculties, scholars and students for attending this session. A very special thanks to our collaborators, Department of Women Education, particularly Professor Amina Tehsin, Dr. Shabana and Professor Shaida, Dean School of Social Sciences, for their support and cooperating in organizing this seminar. Thank you one and all. Please join us again for the plenary session after the tea break. Now let us conclude this session and stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Sim.